Hi guys, welcome back once again. So this time I saw this amazing opportunity by Bharti Airtel. Can you see this is Bharti Airtel Scholarship Program 2024-25, right? And guys, this is from Bharti Airtel. So we all know this is a reputed company, and even every one of us might be using someone in our family is being using the SIM of Bharti Airtel, right? So deadline is 31st October. Today is 21st in July when I am making this video, right? So you have still 1 month, 1.5 month left. So, but I won't really recommend you to wait. As soon as you saw this video, if you think you are eligible, immediately apply for it and do share it with your family, friends, whom you think, should be benefited from this program, right? So I will tell you all the eligibility criteria and all those things. So this is a basic instructions written about Bharti Airtel Foundation. It is a philanthropic arm of Bharti Enterprises and was established in the year 2000. Okay. Now, with the vision of to help underprivileged children and the youth of a country realize their potential. So now let's actually go down. Okay. So for the Bharti Scholarship Program 2024 to 25, students should meet the following eligibility criteria. So these are the eligibility criteria. Okay. Confirm admission or enrollment in the first year of the specialized course in the field of electronic and communication, telecom, information technology, computer science, data sciences, and emerging technologies at the top 50 NIRF engineering colleges. Okay. So if you are currently a class 12 student and next year you are going for a colleges, right? So now they are saying that any of these specialized courses, right? In any of these fields, if you are applying and if you are going to pursue college in the next year, in the first year, in the next, right? So are the top 50 in IIF engineering college? So this is a list of top 50 in IIF engineering college. So they have also attached the list. So if you are taking admission in any of these colleges, in next year, right? Then you are eligible to take this scholarship and must be a citizen and resident of India. Family annual income from all the sources should not exceed 8.5 lakh. That means आपकी family income 8.5 lakhs तक होनी चाहिए, okay? Applicants should not be recipient of any other scholarship or grants for the same purpose supported by the Bharti Airtel Foundation. So कोई और scholarship आप मत apply करिएगा, और इफ ऑलरेडी अप्लाई किया है भारती एयरटेल की तरफ से, ओके, भारती एयरटेल की कोई भी स्कॉलरशिप में आपने अप्लाई किया है, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस, ओके। बट अगर नहीं किया है एंड इफ यू थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर यू, सो अप्लाई फॉर दिस थिंग, ओके। एंड गाइस, लिखा है इंपॉर्टेंट नोट दैट वुमेन स्टूडेंट्स आर इंकरेज टू अप्लाई। सो यहाँ पे वुमेन्स को ज्यादा बेनिफिट्स होगा। सो इफ यू आर अ वुमेन, राइट, एंड यू आर सीइंग दिस वीडियो एंड इफ यू थिंक दैट यू फिट्स इन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डू कंसिडर अप्लाइंग फॉर दिस, राइट। गाइस, 100% स्कॉलरशिप आपको मिलेगी यहाँ पे भारतीय एयरटेल की तरफ से, एंड विच द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज एक्चुअली गुड, राइट। टॉप 50 एनआरएफ कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले रहे हो नेक्स्ट ईयर में, एंड इफ आपकी फैमिली इनकम इज around 8.5 lakh, then you should be कंसिडर अप्लाइंग फॉर दिस। सो गाइस, डेडलाइन का वेट मत करो। जैसे जैसे लेट होगा वैसे ही वैसे ज्यादा एप्लीकेशन आएंगी, राइट। एंड अगर आप वीडियो आज देख रहे हो, कल देख रहे हो, कभी भी देख रहे हो, इसको तुरंत अप्लाई कर देना, ओके। एंड इफ यू थिंक देयर आर मोर पीपल हु इज इन नीड फॉर दिस, प्लीज शेयर करो, प्लीज लाइक करो, प्लीज सब्सक्राइब करो गाइस। दिस विल मोटिवेट मी टू ब्रिंग मोर सच वीडियोस फॉर यू पीपल। सो गाइस, इफ यू हैव नोटिस, मैं डेली एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ विच इज गोइंग टू बेनिफिट ऑल द यूथ्स अराउंड देयर, करेक्ट। तो वेरी इजी टू अप्लाई, ठीक है। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एंड अप्लाई नाउ रजिस्टर में क्लिक करके यू कैन गो फॉरवर्ड एंड यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस टाइप ऑफ scholarships. So thank you so much guys, see you then in the next video.